than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of. So you can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I'm basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing your. You're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that. You are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship. So my. Informed the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers, round about that time, Your Lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that Your Lordship. What was the date? I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days, and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, Your Lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, Your Lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your Lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, Your Lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, Your Lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And
Then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspect, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by
an election, a valid election being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they're not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word malafide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is social media, but your stance is that there is malafide of fact and law before the law, the Supreme Court. Now, you must show such malafide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance that ECP is suddenly the same person turned subservient to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality, because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions are pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election, everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I You have fully understood. And I'm going to address that. I work
address both those questions. But for the present moment, Let me start with the facts first, then we come, if we can just start with Lordship, it will members. destroy my scheme of arguments. Okay, fine, okay, fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11 ये हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख की सेम डे ही फाइल हो जाएंगी. जी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग रही है. जी. फिर पोलिंग डे एट पिशावर खैबर पख्तूनख्वा इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस. दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. राइट. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. Right. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. Right. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता. प्लीज सेइंग अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में. जी. ECP में so motu नहीं है ये एक्शन. जी. Somebody has filed a complaints and on the complaint not by ECP so motu. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे न्यू आई है कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे. तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन. जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई विल गॉट दैट. You may ignore the, with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling your mind, and we want to save time also. I appreciate. Because every election we will find some more this for particular form not submitted, that thing not done. Okay. We be charitable there. ठीक जी. ठीक. So your lordship, my coming back to my point. So एक ऑर्डर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था. They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज प्रूव. Now what is a symbol, sir? I know we know what a symbol is. Now but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol. When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think
elections of the Pakistan People's Party, which let me just इससे पहले भी जा सकते हैं। बहुत पहले जा सकते हैं, at least when I was I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं, but जब पॉलिटिकल पार्टीज वाजे तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर in those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any action will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know, the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy, went. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment, is weighing heavy on the election commission and doing something, you will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। दरअसल आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they're malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments in Lordship as always. There's no point in bringing, although it's it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of. You can withdraw it if you want to. I withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that
arena, I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing your, you're not saying Malafide. I'm not saying Malafide, in fact. Please proceed. In that You are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page. I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, maybe I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point of what. I don't disagree with you at all. But so I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको control कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौकिफ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में. मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर
आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में अनलेस सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order भी they have certain violations ना, तो Not the only violation of the appointment. there are certain violations. Not a If you point. want to see page 613 of the paper book, Yeah. it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, Yes. because I want to be very clear, ECP is not saying that. नहीं, I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। अरे, They are actually, they have taken a very serious point on this, and ये they पढ़िए, have पहले आप ये पढ़ लीजिए paragraph 22, page पेज बताइए प्लीज। page 612 के ऊपर paper book number 1, of the paper book. नहीं sorry paper book number 3. Paper book. ये paper book. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also failed to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. आगे चलिए। Clause 1 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75%. For smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there's enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. ये पढ़ते रहिए। Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. Para 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter, 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission. आगे। As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019.
Only appointment of a single federal election commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document, that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of federal election commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो election commission ने point out किया है सिर्फ और सिर्फ appointments के basis पे किया है, not on the question कि आपने कहाँ venue कहाँ था, not on the question कि आपकी schedule. अली ज़फर साहब जी, That is what I'm saying. नहीं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी. आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तो अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो कहीं ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं, शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को ही उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं आपको इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल, सर जफर साहब, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग.
یہ جو judgment is impugned before us, has also not gone into that. ٹھیک ہے، اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں، جو ان کا ریشو آف دی ججمنٹ ہے، they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra party election. تو پہلے ہم نے وہ تھریشولڈ کرنا ہے cross. سے دوسری ہوگی نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. you are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. So then you have to show from different provisions of law that That is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. پر اس کی جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو then there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. وکیلوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں گے. اب آپ ایک ججمنٹ آپ بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. اگر آپ کوئی خاص مخصوص پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا that is where I'm going first. ٹھیک ہے, یہ الیکشن میں دیکھنا ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے. جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر ایک جگہ ہے. نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. آپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ. اس میں پہلے ہی انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, the petitioners have questioned the impugned order on legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں گے. انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروب نہیں کر سکتے. I will show that. کیسے رول نہیں ہے پھر وہ, پھر انٹر پارٹی الیکشن کا جو سلیکشن ذکر ہے, that is what I will show ذکر ہے کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ اور جو کرنا ہے, اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی, there is a پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی. But that doesn't mean that election commission can look into that and say کہ یہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے. بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور, میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جائے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کرو نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس سمبل. تو لیا ہم سے, پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No. Even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. آپ نے ان کو کہا letter does not confer jurisdiction, sir. No, دیکھیے نا, اتنی تو بات نہ کریں نا. الیکشن کمیشن نے آپ کو, جب آپ کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہ باتیں
میڈیا والی باتیں الگ ہیں, کورٹ والی باتیں الگ ہیں. اس وقت آپ کو خط لکھا برائے کرم الیکشن کرا لیں, آپ وقت گزر گیا, آپ نے الیکشن ابھی تک نہیں کرائے, نہ اپنے آئین کے مطابق اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا الیکشن سمبل لے لیں گے. انہوں نے آپ کو دھمکی نتیجہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا جی حضور مجھے کووڈ آ گیا, مجھے 1 سال کا موقع دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا آپ کون ہے میرا سمبل لینے والے, آپ نے ہمیں دھمکی کیسے دے دی. بے شک الیکشن کرانا الگ ایشو, ہر دھمکی کا جواب نہیں دینا چاہیے بلا وجہ, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے, پھر الیکشن آپ نے کیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صحیح طور پہ نہیں کرا رہے ہیں الیکشن. آپ چلے گئے لاہور, تو پھر چلے گیا پشاور. تو یہ دیکھیں بنیاد سے شروع کریں نا, الیکشن کمیشن نے کیوں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ صرف آپ ہی کو تنگ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے, وہ ہوتا ہے ڈسکرمنیشن کا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو 13 پارٹیز کو اور وہ کر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پرسوں ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا اے پی ایم کیا ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سر کہ وہ بھی ان کو ڈسکرمنیشن پہ میں آؤں گا, وہ بھی گراؤنڈ ہے میری, ڈسکرمنیشن بھی ہے. تو ادھر سے آغاز کریں شروع سے. میں شروع سے کر رہا ہوں سر. فرسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ای سی پی ہیز نو جورسڈکشن ایٹ آل. نہیں تو یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا, قانون کا Let us start, sir. Let us start with the constitution. ٹھیک, سب سے بڑی چیز ہے آئین. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. Right, sir. شکر ہے. So let us start with sir the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218. ای سی پی کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose, and جو relevant اس کی 218(3) میں ڈیوٹیز دی گئی. 218(3) میں جی جی, اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, نہیں دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے. یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جنرل الیکشن کی. بالکل, یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219(e) میں. ٹھیک ہے. سو یہ ہم اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو, اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218(e) کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with پارلیمنٹ me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. نہیں 219(e) 218(3) doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 218(3) does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. all it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219(e) یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے, اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا, دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر. بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ, وہ پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لا میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن. آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا, اس پہ میں آتا ہوں. بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ ہے. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219(e) کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, that is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک, یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law.
मिलती है वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मगर ये देखें, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई। 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट लाहौर, व्हिच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच। तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए। इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात। सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया है, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं। मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच। वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपील्ड हो गया है। हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है। नहीं, अब आज भी जिंदा है केस, पेंडिंग पड़ा है। कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे स्टेज से। तो हम कोशिश करते थे कि भाई jurisdiction खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए we have all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने jurisdiction का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इम्पोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज ये FBR is based in इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली jurisdiction। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम ठीक है, आगे बढ़ा। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the propositions, few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if you may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous. First proposition, first and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP, being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional / statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185, does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, Yes. and he may not be aggrieved, but he may say the judgment is wrong. May not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that
generally, the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. is another party aggrieved can come home. ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are मेंबर very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें दो दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ. जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर. हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना चाहें तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 Supreme Court 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 Supreme Court. That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही दो जज. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. तो इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? कि आपकी तरफ से आगे आपके अगली पार्टी हो ही नहीं सकती. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो फुल मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी, इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंपनी इसके जो दे रहे थे ना ये बार-बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट पे नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, right of information वाला. मुख्तार अहमद अली वाला केस. हाँ, तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन. तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता. जी, another 5 minutes I'll provide. हाँ, पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लीजिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled
Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the journalists in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is the superior court. The registrar means the superior court is before the high court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. Ye kya baat hui? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये logic नहीं समझ institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in अगर dispute. कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया आपने चैलेंज भी नहीं किया तो मतलब ये नहीं हम ऐसा सिचुएशन सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस देखें आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू सुन तो लिया मगर आई डोंट मौजूद नहीं है। अब ये वाला एक आपने एक आ गया बाकी चारों के भी आ जाएंगे अभी आ जाते हैं मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को अभी करते हैं अदरवाइज ईसीपी को सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया कल देख लेते हैं हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है ईसीपी के रिकॉर्ड में है ये हमारे पास सर ये ईसीपी का रिकॉर्ड आपको हुआ है I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. looks like it उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals हम उन कहना नहीं चाहते ना because you are own person या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं है एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे इलेक्शन कैसे हुआ किस तरह पैनल बने हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं ठीक या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है फिर आपको सुनेंगे वो तो ठीक है आप तसल्ली रखें ना क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना अली जफर साहब आपसे नहीं पूछा है कुछ हम इनसे पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं आपके वकील से पूछ रहे हैं कह रहे हैं सर तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर ये एक्चुअली होता ही है गुस्सा सुना है मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ ये मुझे पता है Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. But if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना कोई बात नहीं आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे I mean, if he, I mean, this just show. What can I say? नहीं, I think. कह सकते हैं मैंने तो एज ए मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है आपने उससे भी पीटीआई के क्वेश्चन पूछे हैं लॉ क्लर्क के मुझे पता है सारा Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but PTI, a face of PTI. ठीक है? तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता मगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे तो फिर इज इट ये भी तो हो सकता है ना लीड कैप्चर हम कहते हैं पॉलिटिकल कैप्चर भी हो सकता है और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ अ मेंबर्स राइट्स नॉट टू कंसर्न बट जनरली यस इलेक्शन हो गया खत्म या कोई कंप्लेंट आया अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे कोई मेंबर करे नहीं तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो
یا الیکشن کمیشن جا کے اس کے گھر میں گھسے. یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لو. ٹھیک. That, I mean, I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. جی فرمائیے. تاکہ your lordship at least get satisfied کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہوا. ہاں and not going into the nitty gritty of it. Now, your lordship, اس کے بعد اب question arose کہ nomination papers. So what was done was nomination papers کی copies ہیں. ادھر. So nomination forms کی جو اگر from page 34 پہ چلے جائیں. 34. تو these were the forms that were available. It's simple one pager. ایک فارمیٹ لگایا اس کا. I so and so CNIC نمبر ڈالنا ہوتا ہے. اسٹینڈنگ ممبر آف اتنا propose the name of so and so. اینڈ ایک اس کا سیکنڈر ہو جائے گا, پروپوزر ہو جائے گا. دیٹس آل دیٹ از ریکوائرڈ فار دا فارم. اینڈ دین اس کے ساتھ نیکسٹ پیج اگر آپ دیکھیں, پیج 35, پیج 35 دیکھیں تو یہ پیج 35 پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پینل فارم میں اس طرح پھر سائن ہو کے آتا ہے. آل دا پینلسٹ سائن. سو یور لارڈشپ کین سی کہ یہ جو آپ نے 34 پہ دکھایا ہے یہ کس کا ہے؟ عمر ایوب خان کا. جی, دس از ہز پینل. عمر ایوب خان کا نامینیشن پیپر سبمٹ ہوا ہے 1 ڈسمبر 2023 کو. And it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. اور اس کے ساتھ پیج 35 پہ سر بیکاز اٹس اے پینل الیکشن تو اس نے اپنا پینل بھی دے دیا. Your lordship can see the panel that has been given. دوسرے پینل کے پیپر کا ہے جی, دوسرا پینل دوسرا کوئی نہیں آیا. No other panel came like this. So this was one panel that came only. یہ تو ٹوٹل 15 آدمی کا پینل ہے. جی, یہ جیتا ہے. یہ جیتا ہے. تو یہ جو آپ کے وہ آپ نے جو لسٹ بھیجی ہے وہاں پہ پورے صوبوں کے مطابق اس کا ٹوٹل نمبر 91 ہے جو آپ کے آفس میں الگ ہے سر. ہر پینل الگ سے آیا. This is the format. 91 persons are elected and opposed. 91 ہیں. Correct. آپ نے جو الیکشن کو دیا سی پی کو. Every person has the same kind of form. نہیں, پینل جو ہے آپ کے کتنے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہا نا. آپ کی پیپر بک سے آپ نے ایک عمر ایوب یہ سینٹرل تھا سر. ایک پینل ایوری پروونس. مگر ٹوٹل نمبر آف ان اپوز کینڈیڈیٹ آپ کے پاس جیتے ہیں وہ 91 ہے پورے ان ٹوٹیلٹی. ٹوٹل پینلز تھے سر. ٹوٹل پینل کتنے؟ ہر صوبے کے لیے ایک پینل. ٹوٹل پینل جی ایک پینل آیا. 5 اور اس میں جو جی آپ سر 4 صوبوں کے لیے پینلز تھے. 20 پر 20 بند ہو اس کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے نا, اس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ نے ایک پینل 13 آدمیوں کا لگا دیا جبکہ انپوز آئے 91. کون سے باقیوں کا بھی دیتے ہیں. ایک فارم لگایا آپ نے, وہ بھی کوئی شہروز احمد ہیں, انہوں نے ان کو پروپوز کیا ہے عمر ایوب خان کو. یہ ہے سینٹرل پینل کا. اسی طرح پینل کیا مطلب, کیا لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اکیلے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ That's the constitution says نہیں. Constitution says کہ آپ کے پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. So if I want for example to say کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, I can't come alone. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے سر. ایسے تو ہوتا ہے کہ پینل ہوتا ہے مگر پھر بھی پینل بات کرنا چاہیں گے. اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو آپ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں وہ فی الحال جیل میں فیسنگ ٹرائل. تو کل کو کہ یہ لوگ کون ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں؟ یا تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ لوگ فاؤنڈنگ ممبرز تھے, ٹھیک ہے. وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے الیکشن تک نہیں لڑنے دے رہے ہیں. شاید بہت برا ہو, آپ کو نہیں پسند ہو, مگر وہ الیکشن کو ہی اس کو رائٹ تو دے دینا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مجھے پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں, وہ آپ کے اندر گھر والا کہہ رہا ہے تو مجھے تو کرنے دو نا, میں کیوں نہ پارٹی کا ہیڈ بن جاؤں.
Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं, उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें। और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा दें ना हमें कि वाकई कुछ हुआ था। कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज। तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे। तो ये हमारा मसला है। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूँ सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया। मैं आपको इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ? मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया। दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सो कमिंग टू द सिंबल सर, साहब जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये जो जजमेंट इज इंक्लूड बिफोर अस, आई आल्सो नॉट गॉन इनटू दैट। ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस। से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू करें कि इलेक्शन कमीशन को इंटर पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूँ मैंने आपको नोट कराया। you are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. But then you have to show from different provisions of law that That is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्स्ट चीजें देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship. What I'm exactly that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाता है। पहले हम जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना, तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे। अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं। जो अगर आप कोई खास पैराग्राफ पढ़ना चाहते